Good morning, class. So let us discuss the question answer of this. Okay. So all of you take out your question answer. See, in this chapter we have discussed see how Jekyll by his witty, that means by his mental power, how he overcome the problem. Otherwise the alligator was behind him, and how nicely he saved himself, है ना, from trapping, otherwise he would have trapped, है ना. See, but the alligator just, you can say, every attempt he did, है ना. Now see, so first question, where did Jekyll so in this chapter, see, here Jekyll and alligator two were there, and the Jekyll want to the alligator want to eat away the Jekyll, and the Jekyll was fond of eating crabs. See how cleverly he saved himself, है ना. So see your first question, where did Jekyll go to hunt crabs? Yes, where did he go? He used to go down to the river. So right there, Jekyll used to go down by the river to hunt crabs. Again I am repeating, where did Jekyll go to hunt crabs? See, he found the crabs near the river, so he was going down for hunting the crabs, and he used to love to eat crabs. So write the first answer, Jekyll used to go down by the river to hunt crabs. Now your next question is, how did the Jekyll free his paw from the alligator mouth? See, when he gone for hunting, at the time of, he was so much hungry that he even did not see what was there in water. And what he did, he just put his paw in the water. When he put his paw in the water, then he saw that his paw is caught by alligator. Now when he saw that his paw is caught by alligator, now see how cleverly he take out his paw. Now the Jekyll spoke to the alligator that it was not his paw, it was root growing in shallow water. So once again I am saying, the Jekyll spoke to the alligator that it was not his paw, it was root growing in shallow water.
कि वो रूट जो था वो शैलो वाटर में ग्रो कर रहा था, बल्कि उसका पॉ नहीं था. ओके, सो ही बिफोल्ड हिम. और क्रोकोडाइल को भी, एलिगेटर को भी यही लगा कि वो वाकई में उसका पॉ नहीं रूट है, क्योंकि उसने भी बिना देखे बाइट किया था, और इधर भी इसने भी बिना देखे पैर रखा था. ओके, सो द जैकल स्पोक टू द एलिगेटर that it was not his paw, it was root growing in shallow water. Now, why did the alligator stick out his snout from the water? ये शो करने के लिए उसने अपने आप को शो किया था कि वो क्रैब है, ठीक है, ताकि वो उसका पॉ पकड़ सके, है ना. सो सिर्फ उसने अपना जो है नोज़ ही बाहर निकाला था, ये शो करने के लिए कि ये क्रैब है. सो राइट देयर, the alligator pretend to be a crab to catch the jackal paw. So he stick out his snout. Snout that means उसने अपना थोड़ा सा नोज बाहर निकाला. ओके, कि आगे का पोर्शन दिखा रही है कि हाँ पानी में क्रैब है. सो राइट देयर, द एलिगेटर pretend to be a crab to catch the jackal paw. So he stick out his snout. Snout that means उसने अपना नोज हल्का सा बाहर निकाला. ये आगे के पोर्शन को कहते हैं हम स्नाउट. ओके, स्नूट कह सकते हो. समवेयर इट इज यूज एज स्नूट, समवेयर इट इज यूज एज स्नाउट. Once again I am telling, the alligator pretend to be a crab to catch the jackal paw. So he stick out his snoot. Yes, why did the alligator blow bubbles? एलिगेटर ने बबल्स क्यों ब्लो किए थे? एलिगेटर ने बबल्स इसलिए ब्लो किए थे ये शो करने के लिए कि ये क्रैब्स हैं, क्योंकि ये जैकल ने कहा था कि जो क्रैब जो बबल्स करता है, डेट मीन्स बबलिंग जब होती है तो क्रैब्स यानी कि वही हैं, और क्रैब्स जो है वो बबल्स ब्लो करते हैं. तो जहाँ पे बबलिंग होती है तो वहाँ पे क्रैब्स है, तो वो अपने पॉज से पकड़ के उसे खा लेता है. और एलिगेटर को तो ये समझ में नहीं आया कि ये स्कीम है, और उसने बबलिंग स्टार्ट कर दी. So, see, the alligator blew bubbles because
Jackal has said that crabs blew bubbles. एंड ही कैच देम विद हिज पॉ. एक्चुअली जैकल ने एक ट्रैप रखा था, उसको शक था कि ये ज़रूर ही एलिगेटर है, कि एलिगेटर कहीं हो ना, तो इसीलिए उसने कहा था कि जहाँ बबलिंग होती है डेट मीन्स वहाँ पे क्रैब्स होते हैं और मैं उन्हें पॉ से पकड़ लेता हूँ. तो एलिगेटर ने बबल्स थ्रो किए, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक जो जैकल है उसकी एक कह सकते हो कि साजिश है, ठीक है, प्लानिंग है. उसने स्टार्ट कर दी बबलिंग और हुआ क्या, वो ही हुआ बेटा, वो पहले से वॉर्न अप हो गया. ओके, सो सी द एलिगेटर blew bubbles because Jekyll has said that crabs blew bubbles and he catch them with his paw. So why the alligator blew bubbles? The alligator blew bubbles because Jekyll has said that crabs blew bubbles and he catch them with his paw. Okay. Now, why did the jackal? What did the jackal decide to eat instead of crabs? Yes, what did he decide to eat? He decided to eat figs. क्या डिसाइड किया उसने? फिग्स खाने के लिए. Figs are, you can say, the fruits, juicy fruits which are found in forest or juicy leaves. So the jackal decided to eat figs instead of crabs. So once again I am telling, the jackal decided the jackal decided to eat figs instead of crabs. Now, see, now next question is, why did the alligator hide in the jackal house? Yes, why he hide in the jackal house? To he wanted to teach jackal a lesson. Okay, actually he wanted to teach jackal a lesson and he want to eat him. और उसने कसम खाई थी कि वो उसे पकड़ के ही दिखाएगा. ओके. So right there, the alligator decided to teach jackal a lesson
Now he vowed to catch him. So he hid inside his house. So, right there, the alligator decided to teach Jackal a lesson. The alligator decided to teach Jackal a lesson. He vowed to catch him. See, the alligator decided to teach Jackal a lesson. He vowed to catch him. So he hid inside his house. इसलिए वो उसके घर पे जाके छिप गया था क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो उसे ढूंढ निकालेगा और उसे खा के ही मानेगा। ठीक है, इसलिए वो अंधेरे में उसके घर पे जाके इवनिंग में छिप गया था। How did the jackal get rid of the alligator? अब जैकल एलिगेटर से कैसे उसे छुटकारा मिला? सी जैकल ब्रॉट सम फायरवुड एंड पाइल्ड इट अगेंस्ट द डोर। जैकल थोड़ी सी फायरवुड सूखी लकड़ियाँ लेके आया था और उसने क्या किया, घर पे डोर के आगे और घर के चारों तरफ उसने सूखी लकड़ियाँ लगा दी अराउंड द हाउस। ठीक है, और उसने घर को क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी। सेट द हाउस ऑन फायर। So, right there, the jackal brought some firewood and piled it against the door. And all around the house. So, he set the house on fire. So, right there, the jackal brought some firewood and piled it
against the door, and all around the house. He set the house on fire. Now, I hope the chapter is clear to you. So, learn and write your question answer. If not written, then write it, and if written, then learn it by heart. Okay? Tomorrow we will discuss its exercise. Okay? So, all have noted down. So, see if anyone has not either, then take a screenshot. Okay? I hope all the question answer are clear to you.